इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 71 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, प्रूव दैट sin a अपॉन sec a प्लस tan a माइनस 1 प्लस cos a अपॉन cosec a प्लस cot a माइनस 1 इक्वल टू 1। फर्स्ट वी राइट क्वेश्चन। We have to prove that sin a upon sec a plus tan a minus 1 plus cos a upon cosec a plus cot a minus 1 equal to 1। We take LHS equal to sin a upon sec a plus tan a minus 1 plus cos a upon cosec a plus cot a minus 1। यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे sec a इक्वल टू 1 अपॉन cos a, cosec a इक्वल टू 1 अपॉन sin a, tan a इक्वल टू 1 sin a अपॉन cos a and cot a इक्वल टू cos a अपॉन sin a। So we can write sin a upon sec a, that is 1 upon cos a, plus tan a, that is sin a upon cos a minus 1 plus cos a, cosec a, that is 1 upon sin a, cot a, that is cos a upon sin a minus 1। Now we solve। Sin a upon 1 plus sin a minus cos a upon cos a plus cos a upon 1 plus cos a minus sin a upon sin a। We write sin a into cos a upon 1 plus sin a minus cos a plus sin a into cos a upon 1 plus cos a minus sin a। यहाँ हम दोनों टर्म में से sin a into cos a कॉमन लेंगे। सो sin a into cos a to 1 upon 1 plus sin a minus cos a plus 1 upon 1 plus cos a minus sin a। Now we solve। Sin a into cos a 1 plus sin a minus cos a to 1 plus cos a minus
sin A plus cos A minus sin A plus 1 plus sin A minus cos A. We cancel cos A by minus cos A minus sin A by sin A. So we get sin A into cos A 2 upon 1 plus sin A minus cos A into 1 plus cos A minus sin A. We write sin A into cos A into 2 upon 1 plus sin A minus cos A cos A और माइनस sin A में से माइनस कॉमन लेंगे. सो आफ्टर टेकिंग कॉमन माइनस we get 1 minus sin A minus cos A. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे a plus b into a minus b equal to a square minus b square. So we write sin A into cos A 2 upon, यहाँ a हमारा 1 है और b sin A minus cos A. So we can write 1 plus sin A minus cos A into 1 minus sin A minus cos A, that is 1 square minus sin A minus cos A whole square. sin A into cos A, यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो वी कैन राइट sin A into cos A into 2 upon 1 माइनस, यहाँ a हमारा sin A और b cos A. सो वी कैन राइट sin A minus cos A होल स्क्वायर, that is sin square A plus cos square A minus 2 sin A into cos A. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे sin square A plus cos square A equal to 1. So we write sin A into cos A to 2 upon 1 minus sin square A plus cos square A, that is 1 minus 2 sin A into cos A. Now sin A into cos A into 2 upon 1 minus 1 plus 2 sin A into cos A. We cancel 1 by minus 1, so we get sin A into cos A into 2 upon 2 sin A into cos A. We cancel 2 by 2, sin A into cos A by sin A into cos A. So we get 1 equal to RHS. So we can see that sin A upon sec A plus tan A minus 1 plus cos A upon cosec A plus cot A minus 1 equal to 1. Proved. Now we will solve question number 72. Prove that
tan A upon 1 plus tan square A whole square plus cot A upon 1 plus cot square A whole square equal to sin A into cos A. First we write question. We have to prove that tan A upon 1 plus tan square A whole square plus cot A upon 1 plus cot square A whole square equal to sin A into cos A. We take LHS equal to tan A upon 1 plus tan square A whole square plus cot A upon 1 plus cot square A whole square. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 plus tan square A equal to sec square A and 1 plus cot square A equal to cosec square A. So we write tan A upon 1 plus tan square A, that is sec square A whole square, plus cot A upon 1 plus cot square A, that is cosec square A whole square. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan A equal to sin A upon cos A and cot A equal to cos A upon sin A. So we can write tan A, that is sin A upon cos A sec to the power 4A plus cot A, that is cos A upon sin A upon cosec to the power 4A. We can write sin A upon cos A into sec A into sec cube A plus cos A upon sin A into cosec A into cosec cube A. यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे cos A into sec A equal to 1 and sin A into cosec A equal to 1. So we can write sin A upon cos A into sec A, that is 1 into sec cube A plus cos A upon sin A into cosec A, that is 1 into cosec cube A. We can write sin A upon sec cube A plus cos A upon cosec cube A. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे sec A equal to 1 upon cos A and cosec A equal to 1 upon sin A. So we can write sin A upon sec cube A, that is 1 upon
cos a whole cube plus cos a upon 1 upon sin a whole cube. We write sin a upon 1 upon cos cube a plus cos a upon 1 upon sin cube a. We write sin a into cos cube a plus cos a into sin cube a. यहाँ हम दोनों टर्म में से sin a into cos a कॉमन लेंगे. So we get sin a into cos a to cos square a plus sin square a. By taking common sin a into cos a. यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1. सो we write sin a into cos a to cos square a plus sin square a, that is 1. So we get sin a into cos a equal to RHS. So we can say that tan a upon 1 plus tan square a whole square plus cot a upon 1 plus cot square a whole square equal to sin a into cos a. Proved. Now we will solve question number 73. Prove that sec to the power 4a into 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a equal to 1. First we write question. We have to prove that sec to the power 4a into 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a equal to 1. We take LHS. Equal to sec to the power 4a to 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a. Now we solve sec to the power 4a minus sec to the power 4a into sin to the power 4a minus 2 tan square a. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे sec a इक्वल टू 1 अपॉन cos a. So we write sec to the power 4a minus sec to the power 4a, that is 1 upon cos a whole power 4 into sin to the power 4a minus 2 tan square a.
we can write sec to the power 4a minus sin to the power 4a upon cos to the power 4a minus 2 tan square a. Sec to the power 4a minus sin a upon cos a to the power 4 minus 2 tan square a. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे sin a अपॉन cos a इक्वल टू tan a. So we can write sec to the power 4a minus sin a upon cos a, that is tan to the power 4a minus 2 tan square a. We can write sec square a whole square minus tan square a whole square minus 2 tan square a. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b. यहाँ a हमारा sec स्क्वायर a है और b tan स्क्वायर a. So we can write sec square a minus sec square a whole square minus tan square a whole square, that is sec square a plus tan square a into sec square a minus tan square a minus 2 tan square a. यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1. So we can write sec square a plus tan square a, sec square a minus tan square a, that is 1 minus 2 tan square a. We get sec square a plus tan square a minus 2 tan square a equal to sec square a minus tan square a. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1. So sec square a minus tan square a, that is 1 equal to RHS. So sec to the power 4a into 1 minus sin to the power 4a minus 2 tan square a equal to 1. Proved. Now we will solve question number 74. Prove that cot square a into sec a minus 1 upon 1 plus sin a equal to sec square a into 1 minus sin a upon 1 plus sec a. First we write question. We have to prove that cot square a into sec a minus 1 upon 1 plus sin a equal to sec square a into 1 minus sin a upon 1 plus sec a. We take LHS equal to cot square a into sec a minus 1 upon 1 plus sin a. यहाँ हम न्यूमरेटर में sec a minus 1 को रैशनलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 plus sin a को.
सेक ए माइनस 1 को रेशनलाइज करने के लिए सेक ए प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस साइन ए को रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे. सो बाय रेशनलाइजेशन we multiply sec a plus 1 into 1 minus sin a in numerator and denominator. So we can write cot square a into sec a minus 1 into sec a plus 1 into 1 minus sin a upon 1 plus sin a to 1 minus sin a into sec a plus 1. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. न्यूमरेटर में a हमारा sec a और b 1, so we can write sec a minus 1 into sec a plus 1, that is sec square a minus 1 square into 1 minus sin a upon डिनोमिनेटर में a हमारा 1 है और b sin a, so we can write 1 plus sin a into 1 minus sin a, that is 1 square minus sin square a. So we can write cot square a into sec square a minus 1 into 1 minus sin a upon 1 minus sin square a. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे sec square a minus 1 equal to tan square a and 1 minus sin square a equal to cos square a. So we can write cot square a into sec square a minus 1, that is tan square a into 1 minus sin a. 1 minus sin square a, that is cos square a. We can write tan a into cot a whole square to 1 minus sin a upon cos square a. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan a into cot a equal to 1 and cos a equal to 1 upon sec a. So we can write tan a into cot a, that is 1 square into 1 minus sin a upon cos square a, that is 1 upon sec a whole square. So we can write 1 minus sin a upon 1 upon sec square a plus 1.
So we can write sec square A into 1 minus sin A upon 1 plus sec A equal to RHS. So cot square A into sec A minus 1 upon 1 plus sin A equal to sec square A into 1 minus sin A upon 1 plus sec A. Proved. Now we will solve question number 75. Prove that 1 plus cot A plus tan A into sin A minus cos A equal to sec A upon cosec square A minus cosec A upon sec square A equal to sin A into tan A minus cot A into cos A. First we write question. We have to prove that 1 plus cot A plus tan A into sin A minus cos A equal to sec A upon cosec square A minus cosec A upon sec square A equal to sin A into tan A minus cot A into cos A. We take LHS equal to 1 plus cot A plus tan A into sin A minus cos A. पहले हम 1 plus cot A plus tan A into sin A minus cos A से sec A upon cosec square A minus cosec A upon sec square A प्रूव करेंगे. Then sin A into tan A minus cot A into cos A. Now we solve sin A minus cos A plus sin A minus cos A into cot A plus sin A minus cos A into tan A. Sin A minus cos A plus sin A into cot A minus cos A into cot A plus sin A into tan A minus cos A into tan A. यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे. tan A इक्वल टू sin A अपॉन cos A and cot A इक्वल टू cos A अपॉन sin A. So we write sin A minus cos A plus sin A cot A, that is cos A upon sin A minus cos A into cot A plus
sin A into tan A minus cos A to tan A, that is sin A upon cos A. We cancel sin A by sin A, cos A by cos A. So we get sin A minus cos A plus cos A minus cos A into cot A plus sin A into tan A minus sin A. We cancel sin A by minus sin A, minus cos A by plus cos A. So we get sin A into tan A minus cos A into cot A equal to RHS. And now we take sin A into tan A minus cos A into cot A. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे tan A equal to sin A upon cos A and cot A equal to cos A upon sin A. So we write sin A into tan A, that is sin A upon cos A minus cos A cot A, that is cos A upon sin A. So we get sin square A upon cos A minus cos square A upon sin A. यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे sin A इक्वल टू 1 अपॉन cosec A and cos A equal to 1 upon sec A. So sin square A, that is 1 upon cosec A whole square cos A upon 1 upon sec A minus cos square A, that is 1 upon sec A whole square upon sin A, that is 1 upon cosec A. Now we write 1 upon cosec square A into sec A minus 1 upon sec square A into cosec A. So we can write sec A upon cosec A, cosec square A minus cosec A upon sec square A equal to RHS. So we can say that one plus cot A plus tan A into sin A minus cos A equal to sec A upon cosec square A minus cosec A upon sec square A equal to sin A into tan A minus cot A into cos A. Proved.